evening, you're watching Breaking Views. I'm Rishika Barua. Violent protests across Bihar, Telangana, Uttar Pradesh, Haryana, Delhi, Jharkhand, West Bengal, Odisha, Punjab, Madhya Pradesh and several other parts of the country. From the north, over the last 2 days, protests have now spiraled to the south. A 19-year-old from Warangal has died and over 15 others injured in Telangana's Secunderabad. Trains were burnt down, buses were targeted. Hundreds of people have been arrested across these states. The most telling pictures, kids in Bihar seen weeping as their school bus was stranded amid the violence in Darbhanga. डर लग रहा है क्या? किस चीज का डर लग रहा है बेटा आपको? अरे बेटा कोई बात नहीं बेटा बैठ जाओ। बेटा डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है क्या? नहीं। किस चीज का डर लग रहा है बेटा आपको? अरे बेटा कोई बात नहीं बेटा बैठ जाओ। किस चीज से डर लग रहा है बेटा? Unfortunate scenes across India today. The question we're asking on Breaking Views, are the Agnipath mobs a grim reality of unemployment in the country? Take a look at the data. The 10 worst performing states in the country are Haryana, with the highest unemployment rate of 24.6% as per the May 2022 data that is available with CMIE. Delhi unemployment is at 13.6%. In Bihar, the unemployment is also over 13%. In Jharkhand, it's over 13%. In Telangana, which has seen huge protests today, the unemployment rate is at 9.4%. So take a look at those states where the unemployment is the highest. Also, let's take a look at India's unemployment data and understand what's happening. If you look at the rural unemployment data in that chart, it's currently at 6.6%, but it was as high as 8.7% a year ago. If you look at the urban unemployment data, it's at 8.21% and was over 10% year ago. The overall unemployment is over 7% and it's down from about 9% a year ago. Therefore, this begs the question, are army jobs a last resort for these protesting youth? Is the anger, therefore, over Agnipath a result of the unemployment angst that's been simmering for far too long? This is not a story that has unfolded in the last 3 days, but this is palpable anger simmering perhaps for far too long that has resulted in the most unfortunate scenes that we've seen across the length and breadth of India. Before I introduce my panel tonight, let's just listen in to what protesters are saying. What is it that they really want? क्या कर सकते हैं मैडम, लास्ट तो जान भी ना हमारे पास कुछ नहीं है आप देने के लिए। आप दांतों पर कुछ लगा चुके हैं, हमारी जान भी 11 बार जब डेट गया तो हम क्या कर सकते हैं, आप भी बोलिए। मैं 2021 में 5 मार्च को रैली हमारा सबका कंडक्ट हुआ। मेडिकल भी फिट है, हम लोग फिजिकल भी फिट है। ये लोग क्या बोले कि मई में आपका एग्जाम रहता, चलो मई में कोरोना आया तेलंगाना में तो हम लोग ये कर दिए, ठीक है वो हो गया, चलो नेक्स्ट पोस्टपोन करेंगे। अक्टूबर बोले, नवंबर बोले, नहीं कराए। फिर जनवरी बोले, उसमें भी नहीं कराए। फरवरी बोले, उसमें भी नहीं कराए। उसके बाद क्या कर दिए, 1.5 साल के बाद टीओडी लागू कर दिए। टीओडी लागू हम क्या करेंगे अब, टीओडी 4 साल जाके हम क्या करेंगे? ठीक है, हम 4 साल काम करेंगे, जिसमें 6 महीना जो है ट्रेनिंग है और 8 महीना जो है हम घर जाएंगे। क्या मतलब है उसका, छुट्टी 2.5 साल में हम क्या कर लेंगे? ये देश के सीमा पे भेजते, बोले सीमा पे जाके हम क्या करेंगे? जब आपने जो भर्तियां हैं जो 4 साल के लिए केवल कर दिया है, तो ये नेता लोग के चुनाव भी तो 4 साल के लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आपका और उसके बाद 15 में उठ गया भरोसा, उसमें से तो 15 में उठ गया भरोसा। जब बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे तब ये भरोसा उठ गया उसमें से। 6 साल से बातें नहीं कुछ चल रहा है, मात्र 6 साल से हम दौड़ रहे हैं, मात्र 4 साल के लिए। सर आर्मी एक मेरा माँ बाप हम पे भरोसा किया है कि मेरा बेटा आर्मी बन के आएगा। हम गरीब घर से सर यहाँ पटना में आके पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हर सुबह गंगा नदी जाते हैं बाला में दौड़ने के लिए, मात्र 4 साल के लिए। ये 4 साल के बाद फिर क्या करेंगे सर, भीख मांगेंगे। मैम 23 साल 1 महीना होगी जी, कोरोना काल में कोई भर्ती नहीं दी जी। एनसीसी होल्डर बंदा हूँ जी, सी सर्टिफिकेट है मेरे पास जी, न एक भर्ती नहीं दी जी। और जी पेपर दे रहा हूँ जी, उसमें फिजिकल दे रहा हूँ सेंटर का जी, वो पेपर नहीं करवाया जी। एक बात बताओ आप जी, मैं फांसी ना खाऊं तो जी क्या खाऊं जी, ये बताओ जी आप मेरे को जी। All right, so those are some of the main reasons why protesters have taken to the streets. They want pensions, they want job security, they want an age relaxation. And these are, of course, youth who've been waiting for a chance to get into the armed forces for
over 2 years now. There's been a hiring freeze, so clearly the number of people who want in are extremely high. Let's go across to our panel this evening. Shivam Vats, I beg your pardon, who is a job aspirant, joins us from Bihar. Yogendra Yadav, member and former president of Swaraj India. Pawan Khera, spokesperson of the Congress. Professor Govardhan Das, leader of the BJP. Lieutenant General Raj Kadyan, former deputy chief of army staff, is also with us. And we have Rajiv Ranjan Prasad, national secretary of the JDU, will be joined by Sarika Paswan of the RJD in just a bit. Shivam Vats, to you first. I mean, it's been very, very unfortunate to see the kind of protests that we've seen spiral. How does this end? The government has said that there are going to be certain relaxations, but at the same time, the government is planning to power through with this scheme. Yeah, first of all, अगर ये प्रोग्राम लाना ही था तो इसके लिए सबसे पहले तो इसका नोटिस आना चाहिए था सही ढंग से, और अगर इसका नोटिस नहीं आया तो जो पहले से बच्चे तैयारी कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि मैंने 2019 में एक बार फिजिकल क्लियर किया, फिर उसके बाद 2020 में किया, फिर 21 में किया, और जब हमने फॉर्म भरा था तो इस तरह का क्राइटेरिया नहीं था, और जब फॉर्म भरा, फिजिकल क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया, उसके बाद जब मेरी एग्जाम की बारी आई तो पिछले 1 साल से टाइम टू टाइम दिया गया, डेट दिया गया, अब आपका फिजिकल होगा, अब आपका फिजिकल होगा, और उसके बाद जो है सो सीधा कहा गया कि ठीक है, आपका पुराना सारा भर्ती कैंसिल है और फिर से आप अग्निपथ के तहत भर्ती हो जाओ। ठीक है, अग्निपथ अगर सही है, ठीक है, हम लोग मानते हैं कि अग्निपथ सही है, लेकिन जो बच्चे पहले से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जाम तो हो, पहले एग्जाम उनका फर्स्ट प्रायोरिटी उनका एग्जाम है, फिर उसके बाद अग्निपथ या फिर जो भी सरकार का नियम है। ये नहीं कह रहा है कि हम गलत है, लेकिन सही अगर है तो उसको सही साबित करने के लिए सरकार को समय देना चाहिए था। तुरंत अपने तरह से एक फैसला लेके आए और थोप दिए कि हाँ भाई चलो अग्निपथ के तहत भर्ती हो जाए। ऐसा तो क्या ये जॉब्स का सवाल है? एट द एंड ऑफ द डे शिवम, क्या ये जॉब्स का सवाल है? नौकरियां नहीं है लोगों के पास। आखिर कोई बच्चा अगर सेना में जाना चाहता है आज के डेट में मैडम, तो जैसे ही वो फिजिकल का तैयारी शुरू करता है ना, बाकी सारे नौकरियों का रास्ता बंद करके इस रास्ते पे चलता है। नहीं, क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? सारे दूसरी नौकरियों के रास्ता को जब वो बंद कर लेता है, फिर जाके वो डिफेंस में आना चाहता है। डिफेंस में आने के बारे में अगर कोई सोचता है तो उसको एक बार अपने दिमाग में सेट कर लेना था कि बाकी सारा रास्ता मेरे लिए बंद है। आज के डेट में सेना में कौन जाता है? जो गरीब वर्ग है, जो बहुत ज्यादा गरीब है, जो कि ज्यादा हायर एजुकेशन नहीं ले पाता है, या फिर जो किसान है, बहुत जो गरीब है, सीधा मानिए कि जो सबसे पुअर वर्ग आते हैं हमारे देश में, वही बच्चा। That's a very important point, शिवम वत्स, आप बहुत important चीज बोली आपने। I want to take this to Yogendra Yadav with us. Yogendra Yadav, what Shivam has essentially said is that it is the poorest of the poor, those left with no other option essentially, who are looking for some kind of job security, a lifelong pension, and that is what makes the armed forces so very attractive. And this is a scheme that essentially kills all of that. Absolutely. We need to put this in a larger context. What we are witnessing is undoubtedly the most widespread and spontaneous protest that we have witnessed on the issue of unemployment in this country for the last maybe 5, 7, 10 years. Do remember that in January, around 26th of January, we saw another such protest in Patna and in Allahabad. So while we all regret and condemn the violence that is taking place, that is not the only thing that we can talk about this agitation. There is something deeper at play here. And you are absolutely right to focus. We sometimes say there is an occasion and there is a cause. The occasion is the Agnipath scheme. The deeper cause is unemployment, widespread unemployment. Just listen to what Shivam was saying a few seconds ago. The government announces recruitment to the army. Medical is held, physical tests are held, and actual written test is simply not held. In the case of Air Force, all the tests are held, interview is held, but final is not given, and now everything stands cancelled. So this is clearly something which upsets them in a larger context where there is massive unemployment. In textbooks, we talk about the Great Depression of America, which caused the biggest unemployment that we talk about in history. I dare say that what we have witnessed in this country in last 2 years
is bigger than the Great Depression of America, which cost 50 million jobs. We've had bigger loss of jobs in this country. And the figures that you shared a few minutes ago, 8%, 9%, 10%, they are only tip of the iceberg because these are unemployed. The definition for unemployment here is those who say that they are seeking jobs, that they are looking for it and not getting it. That does not take into account a large number of persons, mostly women, who now say they are not even looking for a job. So we are looking at a huge unemployment crisis. And this is a response, unfortunately, a rather distorted response, because there is no organization, because it is spontaneous, there is no leadership. That is why we are witnessing what we are witnessing. As a country, we owe it to these young people like Shivam that we respond to the root cause of it and do something about it, and not merely offer jumlas to them. Let's get in Professor Govardhan Das to respond to that. Professor Das, अगर आपने good evening Rishika. Yeah, good evening. You know, if you could hear, अगर आपने शिवम की बात सुनी, फिर आपने योगेंद्र यादव जी की बात सुनी. I mean, if you've understood and heard what they've said, I mean, this is essentially disappointment and anger that has been simmering for far too long, that has now just spiraled into these most unfortunate scenes that we've seen. Good evening, Rishika, and good evening to my fellow panelists. I heard Shivam very well, and also I heard Dr. Jogendra Singh. The two things I would like to mention. These are the job seekers. They are on the street and doing violence, and they are supposed to be in military. And they are supposed to, they want to serve the country. The way they are burning the trains and buses, do you think are they fit for serving the country? So the question here is no one is justifying the violence. The violence is extremely unfortunate. We are talking here, no, one second. We are talking here specifically about the trigger. No, in no way does whatever be the end justify these means. This is absolutely condemnable. It's horrible, and I think Shivam said that in the beginning. कि ये बहुत unfortunate है. But cause क्या है? Is the cause the simmering unemployment problem in the country? I'm coming in. I'm coming in point by point. I'm coming in point by point. I have a question. Let me finish. Then you have a question. No problem. Okay. Let him respond, Shivam. I'll give you a chance to ask your question. Second thing, Dr. Jogendra Singh, what he is saying, Great Depression of America, we understand that. And then in America, how many times we observed that this kind of violence is burning trains and buses? He has to answer that. And third thing is, if I can quote, our Chief Admiral Hari Kumar, he says this is the single biggest ever human resource management transformation. I understand. And the sea. Be that as it may, I am not even debating the merits of the scheme on the show today. I am simply asking what has led to this anger. That is the simple question. Shivam had a question for you. This is nothing but a dhanda. This is nothing but a dhanda. Which politicians, some politicians, they instigate some few people, the youths, and they do all this violence. Shivam, actually, this is a fantastic program, and this can lead to the in fact several countries. Many countries have this military training program. देखिए, आज अगर कोई बच्चा सेना में जाना चाहता है तो अपने गांव समाज में किसी से झगड़ा नहीं करता है कि उसके ऊपर कोई FIR न हो जाए, कोई किसी तरह का केस न हो जाए, ताकि उसको सेना में जाने में दिक्कत नहीं हो. और आज वह बच्चा ट्रेन जला रहा है. आखिर क्यों जला रहा है? आज आपको ट्रेन का चिंता है. ट्रेन का चिंता है कि ट्रेन राष्ट्रीय संपत्ति है. क्या हम युवा देश के राष्ट्रीय संपत्ति नहीं है? आज आपको उस ट्रेन के बारे में पता चल रहा है कि जिस ट्रेन को फिर से बनाया जा सकता है. क्या हम युवा देश की राष्ट्रीय संपत्ति नहीं है? यहाँ पे मैं आपसे ये भी बोलूंगी कि वायलेंस किसी भी चीज का आंसर और सोल्यूशन नहीं है. जो हो रहा है स्कीम के तौर पे मैं मानती हूँ कि आपको लगता है आपके साथ गलत हो रहा है, बट जो वायलेंस हो रही है वो उतने ही गलत हो रहा है. पवन खेड़ा, you want to come in here? I mean, the BJP's response so far has been that this is a politically motivated agitation, taking away anything that the protesters are demanding. I want to come for 30 seconds. कुछ न कुछ बात हुआ, उसके बाद तो बैलेंस का सहारा लिया गया. मैडम,
आज देखिए, आज हम लोग को वायलेंस को रोकने के लिए कौन कह रहा है? तो गोडसे को अपना पिता शिवम, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि वायलेंस किसी भी फॉर्म में गलत है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये स्कीम सही है या जो भी है, मैं स्कीम की बात ही नहीं कर रही हूँ। अगर आप वायलेंस को जस्टिफाई करने की बात करते हैं तो वायलेंस किसी भी कोने में किसी भी वजह से जस्टिफाइड नहीं है। पवन खेड़ा, द बीजेपी सेज इट्स अ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। पिछले एक साल अच्छा, पवन खेड़ा जी को बोलने दीजिए। शिवम, मैं आपके पास वापस आऊंगी, उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। पवन खेड़ा। No, I understand Shivam, and people like Shivam should be given more airtime because the nation must hear people like Shivam. Whether Modi ji wants to hear him or not, at least let the Congress party, let Yogendra Yadav ji, and let others listen to Shivam. Shivam needs to be heard. And I'm shocked at the professor, I'm sorry I didn't get his name, laughing on this show. साहब, ये हंसने का समय है प्रोफेसर साहब। देखिए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये हंसने का समय को बताता है ये बात। मैं 12वीं पास किया हूँ और मेरे शिवम, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं आपको और समय दूंगी, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। You are supporting violence. शिवम, government every इस बात का अफसोस हो रहा है, मैं वो बता रहा हूँ। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, sir, you are not sensitive. You are not sensitive enough. आपकी मुस्कान में दिख रही है, आपकी हंसी में आपकी सेंसिटिविटी दिख रही है। प्लीज डोंट कमेंट ऑन माय सेंसिटिविटी, प्लीज, फॉर गॉड्स सेक डोंट इंटरप्ट। See, if you don't understand, you should not comment. Professor Das, one second. You said this is a political protest. Let Pawan Khera respond. Let him respond. What this scheme does to the security of the nation, to the armed forces, is one major critical aspect. What it does to the future of our youth is another critical aspect. Now, on both these aspects, I don't think the government has applied its mind. Okay. Now, can't accuse opposition of fanning protests, whether it's the farmers' protests, आप कांग्रेस करवा रही है, CAA protest कोई opposition करा रही है, यूथ का प्रोटेस्ट कांग्रेस करवा रही है। अरे खुद भी तो अपने गरेबान में झांक कर देखो कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। Lieutenant General Kadian, I want to bring you in here because, you know, one of the big issues when we talk about jobs is the fact that there has been a hiring freeze. If you look at it in terms of a simple demand and supply problem, there are too many people who want jobs today, and what the government is now offering in terms of jobs in armed forces is something that is just not palatable to them. Do you think this is just anger that has been simmering over a period of time that has spiraled? In this scheme, there are two affected parties or the stakeholders. One is the youth. Their anger is obvious. Although one does not condone the violence, it should not be resorted to. The other is the defense forces. They have no voice. Whether they have voiced opposition or agreement, it will never come out in the public. But I can say with my more than 4 decades of experience in the infantry that this scheme is going to be detrimental to the efficacy, to the operational readiness of the defense forces. It is obvious. More so in the army, which is the largest of the 3 services. Even in the army, the largest arm is infantry, where the success or failure is decided by the soldier, not by the ship or the aircraft. Unfortunately, the kind of ethos that a soldier develops during his long association and his lifelong security cannot be developed in a contractual employee for 4 years. These 4 years, these boys rightly will be thinking about their post 4 years future. So their mind, their heart cannot be in the job. No, I think the point that you raise about ethos is very important as well. But Rajiv Ranjan Prasad, I want to come to you. You're the National Secretary of the JDU. I mean, Bihar has really emerged as an epicenter of this protest, as has Telangana. In fact, the TRS, Minister K.T. Ramarao has tweeted to say that we need to introspect on the unemployment problem. He tweeted just moments ago. Is this anger that has been simmering for a very long time that we are now seeing on the streets? Like Shivam said, अगर armed forces में जाना है तो people are very careful. वो तो FIR तक नहीं होने देते अपने खिलाफ. But obviously there is so much anger right now among these people who've been waiting for these jobs for the last 3 years, and the situation has deteriorated to this. देखिए, अब शिवम की बात से बाकी पैनलिस्ट भी सहमत होंगे कि लंबे समय से रोजगार के अवसर कम हुए हैं। आपने जो स्टैटिस्टिक्स अभी सामने रखे और जो अलग अलग स्टेट्स में जो कंपैरेटिव जो डेटा है वो भी आपने सामने लाए। मैं ये मानता हूं कि लंबे समय से नौकरियां नहीं मिल रही है, इनके अंदर असुरक्षा का भाव है
और एक बात बिल्कुल समझनी होगी कि आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आपका विश्वास डेमोक्रेटिक वैल्यूज में होना चाहिए और आपको इस मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपने अगर उनसे ये बात की होती, जिस पैकेज को लेकर के या जिस स्कीम को लेकर के आप आए, उसके कुछ जो उसके सकारात्मक पक्ष है, जो उसके पॉजिटिव जेडीयू तो खुद कह रही है भाजपा को कि आपको रिकंसिडर करना चाहिए, तो क्लियरली इट गोज टू शो प्रोफेसर दास दैट यू नो योर ओन एलाइज वर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। वही मैं कहना चाहता हूं कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने के बजाय अगर आप देश को विश्वास में आपने लिया होता तो शायद इतनी नाराजगी नहीं होती। प्रोफेसर दास, आई हैव 10 seconds. Yeah, so this is nothing but the basically misinformation and misunderstanding. Actually, this is the highest ever the skill development. This program is a skill development. If you think about this, they are absorbing 25%. That means if you are getting, you are absorbed, at least you have 25% to get a job. You're saying it's about skill development, but clearly what we've seen from the data and from the voices on the ground is that people need jobs. And people need job security and they need guarantee and they need to be able to see that they have a future. I wish I had more time to give Shivam. This is clearly a conversation we will continue to have. Yeah, people need job. I wish I had more time to give. Clearly a conversation that we will continue to have. Thank you all very much for joining us on this edition of Breaking News tonight.